Hello, dear students. I welcome you all to another masterclass session. So, आज के सेशन में बेटा हम लोग पिक करेंगे another very important chapter of genetics, which is principles of inheritance and variation. So, जैसे कि हमने पिछले मास्टर क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे ऑन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, टचिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन नीट. तो सिमिलर पैटर्न पे आज के सेशन में भी हम उसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट रेलेवेंट है और नीट में बहुत बार पूछे गए हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. First question that we'll be discussing today begins with Mendel. Of course, you all know that Mendel is also known as father of genetics. And here the question says, Gregor Mendel conducted hybridization experiment on A during the B. So here's a fill in the blank type of question. Now Mendel, किस पे work किया Mendel ने? Mendel worked on pea plant. What's the scientific name for pea plant? It is Pisum sativum. Scientific name है, so that's why you will underline it separately. Now, Pisum sativum or pea plant is not a monocot plant, beta. It's a dicot plant. और ये dicot plant leguminous plant है, ठीक है? और belong कौन सी family को करेगा फिर? It belongs to Fabaceae family. Now, Mendel ने जो experiment perform किया था, his experiment was conducted for 7 years, starting from 1856 to 1863, which makes it the 19th century, right? So the correct answer, the correct option over here for this question will be option B. Okay, let's move on to the next question. How many true breeding pea plant varieties were selected by Mendel for his experiment as pairs which were similar except for one character with contrasting traits? Now this line is exactly there in NCERT. Similar questions आपको पूछे जाते हैं नीट में. Now आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि they have asked about how many true breeding pea plant varieties were selected. आपको कैरेक्टर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है बेटा. टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज वर कंसिडर्ड, जिसमें अगर आप बात करोगे व्हाट इज दिस 7 रेफर्स टू, 7 रेफर्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब आप 7 मार्क करेंगे, राइट? इसको नेगेटिव प्लीज मार्क नहीं करिएगा, ओके? एंड you can also call it that these are pair of contrasting traits. So 7 pair of contrasting traits were considered in his experiment. Clear? Let's move on to the next question. In a dihybrid cross carried out by Thomas Hunt Morgan in Drosophila is fruit fly, okay, between yellow-bodied white-eyed female and brown-bodied red-eye males, and intercrossing their F1 progenies, that means selfing is done over there. It was observed that in F2 generation the recombinants were only. Now here the question directly is asking you to memorize कि भाई आपका जब ये क्रॉस ए एंड क्रॉस बी किया गया है तो पेरेंटल परसेंटेज कितना आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कितना आ रहा है. सो इफ यू जस्ट डायरेक्टली मेमोराइज इट, दिस क्वेश्चन इज विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो इन क्रॉस ए it was 1.3% of recombinants which were seen. अगर आप 37.2% की बात करोगे तो दिस वाज सीन इन केस ऑफ क्रॉस बी, ओके, जहां पे व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स को क्रॉस किया गया था वाइल्ड टाइप के साथ. ओके, let us look at the next question. In pedigree analysis, standard symbols are used to trace inheritance of traits. Which of the following symbol is used when the sex is unspecified? Now, पेडिग्री के सिंबल्स पे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल देव जस्ट गिवन द सिंबल्स एंड आपको बताना है कि भाई क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, इट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय द डायमंड शेप स्ट्रक्चर ओवर हियर. नाउ इफ यू लुक एट द अदर ऑप्शंस, ये किनको रिफ्लेक्ट करते हैं पेडिग्री में? अगर आप सिंपल सर्कल देखेंगे, दैट represents a female. If you see a square, that represents a male. अगर इन पे solid color कर दिया जाए, then this represents affected female, or if it's a solid color, a black square or colored with a square which is filled with any color, it will represent affected male. Now, if you draw a line between these male and female, this is representing marriage or mating. And if there's a double line between these male and female structures over here,
This represents mating between relatives, which NCERT has mentioned as consanguineous marriages. Okay, and option D over here is simply showing that there's a marriage and there's production of a male progeny, which is affected because it is colored over here. Okay, so let us move at to the next question. Okay, so a match the column type of question over here. Okay, so the column A in one, it says genetic map. Okay, so what are genetic maps? Is just a presentation where you predict the sequence of gene on a chromosome. Okay, so it is called a genetic map, similarly like the map that you see in your day-to-day life, right, where it points ki okay, this location is present here, this location is here. So similarly जब आप कोई क्रोमोसोम देखते हो उस पे भी जीन्स को आप मैप करते हो कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स कहाँ प्रेजेंट है. ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एवरी अदर ईयर दे आस्क क्वेश्चंस ऑन इधर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर प्लियोट्रॉपी. ओके, सो नाम ही सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे पॉलीजेनिक, दैट मीन्स many genes. Now what are these many genes doing? They are controlling single character. More than one gene controlling single character is called polygenic inheritance. Now there's a specific feature in polygenic inheritance. यहाँ अगर आप कॉलम 2 में देखोगे, सो यहाँ पे अगर आप polygenic inheritance को स्टडी करोगे देन यू विल सी कि ये एक ग्रेडियंट में फैला होता है. आप जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं नेचर में, एंड जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रेट होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. सो यहाँ पे द करेक्ट मैच वुड बी ट्रेट्स आर स्प्रेड अक्रॉस ग्रेडियंट. ओके, linkage. Now linkage is basically the physical association of two genes on a chromosome. If they are tightly linked, that means they'll not recombine. Okay, and recombination is generation of non-parental gene combination, and we just calculated the parental and recombinant ratio in dihybrid cross now. So recombinant क्या होता है, which is different from a parent, right? Non-parental type दिखेगा जो. Clear? Let's move on to the next question. Okay, in honey bees, हनी बी के बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. हनी बी जो होती है, मेल हनी बी की अगर आप बात करो, दे आर हैप्लॉइड. ओके, दैट मीन्स इनका जो जेनेटिक कंटेंट है वो हाफ नंबर का होता है. नाउ हनी बी में होते कितने क्रोमोसोम है? सो 2n इन हनी बी इज 32 क्रोमोसोम्स. ओके, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, क्वीन हो या फिर वर्कर बी हो, दे आर डिप्लॉइड. नाउ हाउ आर दीज मेल फॉर्म्ड? जो भी क्वीन होगी, इट प्रोड्यूसेस एग्स. नाउ अगर ये एग्स अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, सो दे डेवलप इनटू मेल्स, और मेल्स को हम ड्रोन्स भी बोलते हैं. If there's fertilization, if some of the eggs are fertilized by the male gamete, by the sperm, then there is production of females. तो फीमेल्स यहाँ पे बेटा स्टेराइल हो सकती है, which can be worker bees, या फिर फर्टाइल हो सकती है, which is the queen bee. ओके, नाउ यहाँ पे 2n कंटेंट जो रहता है 32 क्रोमोसोम्स, वो आपको फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्वीन में मिलेगा, वर्कर बी में मिलेगा. बट मेल्स, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग सेल से बने हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल से बने हैं, तो दे आर नॉट डिप्लॉयड, दे आर हैप्लॉइड. दे डोंट हैव 32 क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर होगा, 16 क्रोमोसोम्स आर देयर इन केस ऑफ हनी बी. Are they sterile? No, they are male, they are fertile. Okay. Are they parthenogenetically produced? Yes. Without fertilization, they are just directly being converted egg cell से drones के अंदर. Okay. So answer here would be option D. Clear? Let's move on to the next question. Okay. AR type question. Assertion says mutation is the only phenomenon that leads to variation in DNA. See, mutation is contributing to variation, but it is not the only process जिससे variation DNA में variation देखा जा सकता है. There are other methods also. One such very good example is that you see in case of meiosis. Recombination की अगर आप बात करेंगे बेटा, crossing over, recombination, this will also lead to variation, right? So assertion यहाँ पे जो है वो आपका correct नहीं आ रहा है.
ठीक है. अगर अपन रीजन की बात करें, म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए. एग्जैक्टली, दिस इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी. अगर आप बात करेंगे तो म्यूटेशन अराइज बिल्कुल हो सकता है, चाहे आपका सिंगल कोई बेस पेयर में चेंज हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में आपको देखने को मिल सकता है. ओके, या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए चेंज हो जाए. सो इट सेज दैट म्यूटेशन में ऑकर ड्यू टू alteration in DNA sequence. Now, this can be including single base pair change or segmental change. Correct? So here our correct option would be option D, where assertion is false and reason is true. Okay. So AR type के जो questions है ना बेटा, you have to be very careful while marking these questions क्योंकि negative होने के chances यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं. Right? Let's move on to the next question. Okay. The heterozygous round yellow seeded pea plant, round heterozygous condition, it will be represented like this, was selfed. Okay, that means there was selfing which was done over here, and total of 400 seeds were collected. What is the total number of seeds showing wrinkled yellow phenotype? Means this phenotype is being shown by how many number of seeds. Okay, so how to calculate this? Okay, now if you look at the ratio, they've basically asked about the classical dihybrid cross which is there in NCRT, and the it says showing, that means they're asking about the morphology, phenotype पूछ रहा है. So if you look at the phenotypic ratio, 9 is to 3 is to 3 is to 1 for dihybrid cross. Now इनमें जो wrinkled and yellow seeds होते हैं, that is in 9 is to 3 is to 3 is to 1 का ratio में it's only 3 over here. So out of these 16 progenies, 3 by 16 would be the wrinkled and yellow type seeds. But now here it says that total of 400 seeds were produced. So आप इसको क्या करोगे? You will multiply it with this ratio and you will get 75 total number of seeds which will be having wrinkled and yellow phenotype. Yeah. Let us move on to the next question. Also, from here, they can ask you about the ratio, the percentage, or the number of any of the phenotype. तो यहाँ से कई type के questions possible हैं बेटा. Next question. T.H. Morgan worked with the tiny fruit flies, scientific name is Drosophila melanogaster, for experimental verifications of chromosomal theory of inheritance. That's absolutely correct. Okay. Now it says, as they are suitable for such studies due to many features, which one is among them? So they want you to find out कि कौन सा इन options में से suitable है जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को selected किया गया था as a organism by Thomas and Morgan for his experiments. So if you see the first option over here, they do not grow in simple synthetic media. Not at all. They grow easily in the laboratory. Synthetic media पे grow करता है बेटा, तभी मॉर्गन ने उनको सेलेक्ट किया था, जैसे मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया. राइट, यहाँ से आपको जो दो चीजें याद रखनी है, आप मेंडल के बारे में भी याद रखेंगे कि व्हाई ही चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ड्रोसोफिला को भी क्यों सेलेक्ट किया गया था. सो कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं कि उनका लाइफ स्पैन छोटा होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट, और जो आपके फीचर्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ट्रेट्स होनी चाहिए जो कि इजीली आप पता लगा सको कि अच्छा ये फीचर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आप कंफ्यूज ना हो while taking your numbers and other things during the experiment. Let's look at the second option. The males and female flies are indistinguishable. No, if you look at the diagram given in NCRT, you will see that clearly the female fruit flies are little bit bigger in size in comparison to the male one. So they are easily distinguishable even under the microscope. Okay. Let's look at the third option. It has many types of hereditary variations that can be seen with low powerful microscope. Yes, absolutely correct. Even with low power microscope, it can be studied. So, which was a very good thing. A single mating produces only one offspring. No, it produces a lot of offsprings. Okay. Let's move on to the next question. Match the column type of question, which is very favorite to NEET. They ask a lot of match the column type of questions.
Okay, homozygous condition. Now, what does homozygous condition represent? This says basically, see how to represent a homozygous condition. If I write capital T, this is a homozygous condition where both the allelic pair of a gene are identical, are same. Different forms of gene are called alleles. And if those alleles are same, exactly same, they are homozygous. If they are different, if I write capital T, small t, this is heterozygous conditions, beta. Okay, so here our correct match would be the allelic pair of gene which are identical. Okay, let's talk about codominance. Codominance, the name here suggests that dominance is contributing, both the alleles are contributing towards dominance over here. So in codominance, what happens that the F1 progeny resembles both the parents. Can you give any example for codominance? Think of any example. In ABO blood grouping, the AB blood group, as this person will have IA and IB allele, he'll have AB blood group, and in this blood group, both IA allele and IB allele are expressing itself at the same time. So that is why it is an example of codominance. Okay. Monohybrid cross. Mono means single. Single hybrid cross. Now, sorry, this means that only heterozygous for one character is being considered in this condition. Okay. If it's dihybrid, two characters are considered in heterozygous conditions. What is a gene? Gene is the basic unit of inheritance, and different forms of genes are called alleles. Okay, let us move to the next question. Which of the given trait of pea plant appears in only homozygous condition? Now, see, if you talk about a dominant dominant trait, it will be expressed in both homozygous as well as heterozygous condition. If it's a tall plant, you will see a plant with this genotype as a tall plant, and even with this heterozygous situation as also a tall plant. But अगर आपके पास small t रहेगा, then only this plant will be showing dwarf conditions. So आपको अगर homozygous condition में कोई भी trait express करवाना है, तो अगर आपको सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करवाना है, तो दैट हैज टू बी रिसेसिव. ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा आपको ट्रेट रेसेसिव दिख रहा है? अगर आप कैरेक्टर की बात करोगे तो सीड शेप रहेगा. सीड शेप के दो ट्रेट्स हैं, दो टाइप्स हैं, राउंड एंड रिंकल्ड. तो यहाँ पे एक डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा. जो रिसेसिव है वो आपको हमेशा ओनली एंड ओनली होमोजाइगस कंडीशंस में देखने को मिलेगा. जैसे कि ड्वार्फ अगर आपको प्लांट देखना है, तो ओनली बी seen when the genotype of that particular plant would be small t small t. तो अगर अपन राउंड सीड की बात करें बेटा, तो दैट्स डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, कैपिटल आर, ये आपको कैपिटल आर में भी दिख सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन में भी आपको राउंड सीड देखने को मिलेगा. If I talk about violet flower, again a dominant condition, heterozygous में भी दिखेगा. Now if I talk about yellow pod, now yellow pod जो होता है बेटा, it is a recessive trait जो कि आपको सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट स्टेम हाइट, वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड कि वो हेट्रो एंड होमोजाइगस दोनों कंडीशंस में देखने को मिलेगा. सो द करेक्ट आंसर here would be option number C. Okay, which is a recessive trait. So you can just remember that recessive traits are in homozygous conditions always. Next question. Which of the given represents monohybrid test cross? Okay. So now what is a test cross? See, test cross खुद ही बोल रहा है भाई कुछ तो टेस्ट किया जा रहा है. Now what is being tested over here? अगर मेरे पास कोई ऐसा प्लांट है जो डोमिनेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो टॉल है. Now that plant can have two possible genotypes. या तो वो कैपिटल टी हो सकता है बेटा, या तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है. Now how do I know that this particular plant with a dominant phenotype, इसका जीनोटाइप क्या है, whether it is homozygous dominant or heterozygous dominant? So to find this out, we perform test cross. And test cross का rule है बेटा, it is crossed with the recessive parent always.
ओके, तो यहाँ पे ये एक तरीके का बैक क्रॉस है जहां पे आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो किनको, जो आपके डोमिनेंट फिनोटाइप शो करने वाले प्लांट्स होते हैं उनको। ओके, प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, कौन सा सूटेबल होता है जहाँ पे हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं इन ऑप्शन सी एंड डी। बट इफ यू लुक एट ऑप्शन डी, यहाँ पे तो दोनों ही रिसेसिव कंडीशंस है, तो ये तो मेरा करेक्ट आंसर होगा नहीं। सो व्हाट इज माय प्रेफर्ड एब्सोल्यूट करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दे कैन आस्क यू डेफिनेशन अबाउट टेस्ट क्रॉस, या आपको टेस्ट क्रॉस करके दिखाने को बोला जा सकता है, कुछ रेशियो बताने के लिए बोला जा सकता है क्वेश्चंस में। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट choose the incorrectly matched pair for the following. Okay, so again they are talking about various scientists जो कि इस chapter में जिनका नाम mentioned है, and you must remember the names of the scientists and the years जो भी mentioned है इस chapter में after any scientist के नाम पे. Okay, so the first option over here states Mendel worked on pea plant from 1756 to 1763. Now 56 और 63 तो बड़ा सुना हुआ सा वर्ड लगता है, बट इट्स नॉट 1756 बेटा, इट इज 1856 टू 1863। तो जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बी वेरी अटेंटिव। ओके, सो दिस इज द इनकरेक्ट मैच। And if you look at the other options, rediscovery of Mendel's work, of course, these three scientists worked independently in 1900 to rediscover Mendel's work. Okay, and X body, of course, it was discovered by Henkings. Of course, वो उसका significance नहीं बता पाए, but बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया इसके ऊपर, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड कि जो एक्स बॉडी है ये और कुछ नहीं, दिस इज दी एक्स क्रोमोसोम ओनली, एक क्रोमोसोम ही है, इसलिए एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। Down syndrome, yes, it was described by Langdon Down in the year 1866। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम के ऊपर पूछा जा सकता है, वेयर दे कैन आस्क यू अबाउट द फीचर्स जो कि डाउन सिंड्रोम वाला, जिसको भी डाउन सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उनके फीचर्स क्या होंगे वो आपको पूछा जा सकता है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा सकता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, सो यू मस्ट नो कि क्या उनमें क्रोमोसोमल कंडीशंस रहेंगी, क्या फीचर्स रहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, after self-pollination, a terminal flower of a pea plant produces wrinkle seed. Okay, so now अगर आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन में टर्मिनल फ्लावर एंड रिंकल सीड की बात कर रखी है, एंड ये दोनों के दोनों जो बेटा ट्रेट्स हैं ये रेसेसिव ट्रेट्स हैं। एंड वी डिस्कस कि जो रेसेसिव ट्रेट है वो किस कंडीशन में मिलेगी आपको, होमोजाइगस कंडीशन में ही देखने को मिलेगी, हेट्रोजाइगस में नहीं देखने को मिलेगी। ओके, सो विच आर द फॉलोइंग may be the genotypic conditions of this plant for the flower position and shape of the seed. So it will be homozygous, not heterozygous at all. Okay, so correct option here will be option number D. It will be homozygous for both flower position and seed shape. Clear? Let's move on to the next question. How many of the following are sex-linked disorder? Okay, so there are various disorders in you have discussed. You must have read about Mendelian disorders and genetic chromosomal disorders. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, if you talk about thalassemia, thalassemia is an autosomal recessive disorder. If you talk about sickle cell anemia, it is again autosomal recessive disorder. If we talk about hemophilia, this is a sex-linked recessive disorder. Okay. If we talk about Turner syndrome, now this is not a Mendelian disorder. Okay. यहाँ पे this is a chromosomal disorder. It is not sex-linked disorder. If you talk about color blindness, again this is a sex-linked recessive disorder. And myotonic dystrophy is an autosomal dominant disorder beta. So out of these options which are given here in this question, only two of them are sex linked and they are recessive disorder, sex linked recessive disorder. Okay, let's move on to the next question.
who developed the graphical representation to calculate the probability of possible genotype of offsprings in a genetic cross? तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बात कर रहा है पनेट स्क्वायर की, और पनेट स्क्वायर दिया था एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने जिनका नाम है आरसी पनेट। एंड नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, जहां पे पनेट की नेशनैलिटी के बारे में पूछा गया है, राइट? सो पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन पूछी गई है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the wrong match. Okay. So the first option here says AB blood group in humans. It shows codominance. See, in AB blood grouping, if I talk about the AB blood group only, IA, IB alleles are present. Okay. And here, both of these alleles are expressing equally. That's why the organism is having AB blood group, and which is type of codominance. Okay. Let's look at the second option. Starch synthesis gene of P. It shows multiple allelism. Now, this is not correct. The starch synthesis in P is controlled by one gene. Okay. And this gene has two alleles, capital B and small b. And it is used to explain dominance or incomplete dominance depending on the phenotype that you consider. Okay. So it is not multiple allelism over here. Option C says ABO blood group in humans is it shows multiple allelism. Yes, in ABO blood grouping, the I gene has three alleles: IA, IB, and small I. Okay, if any person has small I gene, he or she will have O blood group. Okay, so it shows multiple allelism, and they can ask questions from multiple allelism that can you study the multiple allelism in an organism in single person? No, you can't, because you need to have all of these alleles to study. So एक इंडिविजुअल में आप स्टडी नहीं कर सकते. Why? Because एक इंडिविजुअल तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके पास तो हमेशा दो ही एलियंस प्रेजेंट हो सकते हैं, टू एन कंडीशन में है बेटा. सो आप मल्टीपल एलिलिज्म को एक पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं. ठीक है, let's look at the last option also. Flare color in Antirrhinum species shows incomplete dominance. Yes, snapdragon में incomplete dominance देखने को मिलता है. कैसे? अगर R का प्रेजेंस है जीनोटिपिक, तो इट विल शो रेड कलर ऑफ फ्लावर्स. अगर कैपिटल R स्मॉल r है, नाउ अगर नॉर्मल कंडीशन, अगर आप बोलोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर यहाँ फॉलो होता, तो कैपिटल आर स्मॉल आर रेड कलर दिखाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या देखते हैं अपन स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम में, वी सी पिंक कलर फ्लावर्स. नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस. स्मॉल आर shows white color. Okay, so this is an example of incomplete dominance. So you must remember the phenotypic and genotypic ratio for incomplete dominance, which is similar, 1 is to 2 is to 1 for both phenotype and genotype. Okay, genotypic ratios. Clear? Let us move on to the next question then. Okay. Female X is suffering from color blindness. Now, color blindness, we just discussed, it is a type of sex linked recessive disorder. Now, what does this mean? This female can pass the color blindness gene to her sons only? No. If you consider this woman, the female over here, she's suffering from color blindness. That means her genotype would be somewhat like this. Okay. And let us just consider that the father over here is normal, or even if you want to consider it as colorblind, both the conditions you can consider, you will see that the X chromosome in the female is passed on to the female, to the daughter also. Okay, and it is passed on to the मेल ऑल्सो. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सन के पास ही एक्स क्रोमोजोम जो है वो फीमेल से जाएगा. डॉटर्स के पास भी जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल से जाता है. द अदर एक्स क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम हर फादर. ओके, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. मदर ऑफ दिस फीमेल कांट बी कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. नो, बिल्कुल वो कैरियर हो सकती है, क्योंकि अगर उनकी मदर कैरियर हुई और फादर अगर कलर ब्लाइंड हुए फॉर दिस फीमेल, ओके, फॉर दिस फीमेल्स मदर, तो यहाँ पे it could be possible that she is colorblind. Okay, so
ये बिल्कुल हो सकता है. सो कैन नॉट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. The mother of this female can be carrier of color blindness. Okay, let's look at the third option. The female X must have received this disease from her father. बिल्कुल ऐसा हो सकता है. फादर जो है यहाँ पे उनके पास एक्स की कंडीशन प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस वाला आपका एलील यहाँ पे देखा जा रहा है, तो वो उनसे रिसीव कर सकती है ये एक्स क्रोमोसोम, which can lead to color blindness in this condition. Okay, so here option C would be my correct answer. If you look at the last option, the genotype of this female is 44 plus XCX. No, she is colorblind. She is not a carrier. So 44 plus XX chromosome तो normal condition है. But since she is colorblind, XC condition रहेगा. You will mark C on the top to represent that she is colorblind. Okay. Let us move on to the next question then. सी यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है. इन क्वेश्चंस को हीमोफीलिया पे भी आपको फ्रेम करके दिया जा सकता है. सो अप्रोच सेम ही रहेगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फिनाइल कीटोनूरिया डिसऑर्डर्स. सो पीकेयू डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है. The gene responsible for phenylketonuria shows polygenic inheritance. This is not a correct statement. It's an incorrect statement. Why? Because PKU shows pleiotropy. What is pleiotropy? When single gene controls more than one character. तो phenylketonuria का जो जीन अगर मॉडिफाई होता है, म्यूटेट होता है, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है. इट इज नॉट पॉलीजेनिक. इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत सारे जीन पीकेयू को कंट्रोल कर रहे हैं. नो. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड हियर वुड बी option B. Okay. Now, if you look at the other options over here, the disease may pass from mother to any of the progeny. Yes, because it's an autosomal recessive disorder. It is not sex-linked disorder कि वो एक ही जेंडर पे आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है. Okay. This disorder arises due to mutation of gene that codes for phenylalanine hydroxylase enzyme. Yes, that's true. Okay. Let us move on to the next question. How many phenotypes are possible for ABO blood group in human population? Okay, so they're talking about the phenotype. Now, ABO blood grouping में आपको total 4 possible phenotype देखने को मिल सकते हैं. How come? If any person, we know that there is this I gene which has 3 different types of allelic forms: IA, IB, and small I. So, if any person has IA, it will show A blood group. अगर आई ए स्मॉल आई रहा बेटा तो भी ए ब्लड ग्रुप ही दिखेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंस है आई ए एलील का. इफ आई कंसिडर आई बी देन दिस पर्सन विल हैव बी ब्लड ग्रुप. बी ब्लड ग्रुप आपको आई बी स्मॉल आई के साथ भी देखने को मिलेगा, राइट? सो टोटल यहाँ पे अभी मेरे पास एक फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप हो गया है. ठीक है. Now, if I make a combination of IA and IB alleles, blood group जो दिखेगा that will be AB blood group. Example किसका है? Co-dominance का. And if I see this small I genotypic condition in humans, तो यहाँ पे blood group मिलेगा O blood group. So कितने phenotype हुआ, कितने type का blood group हमने देखने को मिल रहा है population में? A, B, AB and O. So total 4 phenotypes. A, B, AB and O. Now यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. They can ask you how many possible genotypes are there for ABO blood grouping system in human population. So there your answer will not be 4 now, because now you will consider the genotypes. First genotype, second genotypic condition which is possible, third, fourth, fifth and sixth. So you must remember that in ABO blood grouping phenotype possible 4 and कितने जीनोटाइप होते हैं बेटा? 6. Okay, clear? In ABO blood grouping multiple allelism, co-dominance, dominance, ये सारी चीजें देखने को मिलती है. Okay, इस साल नीट पे 2026 में there was this question which was asked जिसमें पेरेंट का एक जीनोटिपिक कंडीशन लिखी हुई है and they are asking you to make a Punnett square
ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पे मदर या फादर में से किसी का जीनोटाइप लिखा होगा एंड दे कैन आस्क यू अबाउट दी प्रोबेबिलिटीज और परसेंटेज की प्रोजेनी में क्या ब्लड ग्रुप रहेगा, किस प्रोजेनी में क्या ए ब्लड ग्रुप मिलने का क्या परसेंटेज रहेगा, बी ब्लड ग्रुप मिलने का क्या परसेंटेज रहेगा. सो दीज टाइप्स ऑफ क्रॉस कैन आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. Okay, let us move on to the next question then. Okay, a test cross of capital T, small t, capital R, small r, and which is crossed with recessive parent over here. What is the expected phenotypic ratio? Now, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो expected phenotypic ratio ये एक टेस्ट क्रॉस की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है. If I consider the gametes, I'll get capital T, capital R, capital T, small r, okay, small t, capital R, small t, and small r. Now, if I cross it with the recessive parents, I will have only one type of gamete, which is small t, small r. So, if I draw the genotype of the progenies, it will be capital T, capital R, small r, capital T, small r, small r, small t, capital R, small r, small t, small r, small r, and no other ratio over here. Okay, so if I uh, want to take out the phenotypic ratio, that will be 1 is to 1 is to 1 is to 1. So you can just remember that in test cross, the ratio, if it's monohybrid cross, it will be 1 is to 1. If it's a dihybrid cross, it will be 1 is to 1 is to 1 is to 1. It's just a direct way of memorizing this fact. Okay, let us move on to the next question. Okay, dihybrid test cross yields 880 parental and 120 recombinant progenies. Recombination frequency is, so now beta, if you want to find out the recombination frequency, there's a direct formula for it. So here, if I consider the parental progenies, it's 880, recombinants are 120. So total number of progenies that you will have in this condition will be 880 plus 120, which will be 1000 progenies. Okay, so for to find out the recombination frequency, what you need to do, you just need to divide the total recombinant progenies with the total progenies which is there. So it'll be divided by 1000, and if you find out the percentage, you will get 12% in this question. Okay, so the correct option here would be option number B. Clear? Let us move on to the next question. Okay. A woman with blood group A has a child with blood group O. The women's genotype must be. Now, I told you these types of question are frequently asked in NEET, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है विमेन की जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है, तो विमेन का ब्लड ग्रुप अगर अपन जीनोटाइप देखें तो ये भी हो सकता है एंड इट कुड बी दिस ऑल्सो. बट नाउ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया दैट द चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ. दिस मीन्स कि जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है इट इज रेसेसिव, राइट. अब चाइल्ड के पास आई जीन आने के लिए, रेसेसिव आई जीन आने के लिए, द मदर हैज टू बी heterozygous for this condition. IA and I condition should be there. Okay, अगर ये homozygous dominant हुए, okay, and even if the father is having O blood group, तो भी बेटा progeny का blood group क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. And this is not what this question is talking about. It says कि child का blood group O चाहिए. So that is why this mother has to have one recessive allele, at least one recessive allele. Okay, of course, only one recessive allele because she is also having A blood group. Okay, let us move on to the next question. Okay, single gene affects multiple phenotypic traits. This is, so when a single gene controls or affects more than one phenotypic traits, or when you combine different types of trait, you get a character. Suppose height is a character, it has two traits. If I talk about a pea plant, tall or dwarf. So different traits, different characters, these are, this condition is called pleiotropy. Okay.
And polygenic, on the other hand, is a condition where more than one gene will control single character. Can you give me an example of polygenic inheritance? Skin color is one such example. Height is another example wherein many genes are contributing to express that character in population for that particular trait. Okay, let us move on to the next question. Okay, here they're talking about various chromosomal disorders and other things. So, Down syndrome is simply the trisomy of 21st chromosome. Okay, so here every other thing is normal. It's just that there's extra addition of 21st chromosome in this organism. Turner syndrome. Now, what happens in Turner syndrome? You will see 45 chromosomes with only one X chromosome. These females will not have the second X chromosome. If I talk about Klinefelter syndrome, here there is an additional X chromosome which is being added into the genome. Okay, so they'll have 47 chromosomes. And what is the additional thing? Additional X chromosome is there in their genome. Okay, if I talk about sickle cell anemia is caused because of point mutation in beta globulin chain of hemoglobin. So what happens? Glutamic acid is converted into valine at the sixth position of beta globulin chain, and that is why we see sickle cell anemia. Okay, so that's how you will match here: A2, B3, C1, and D4. Clear? Let us move on to the next question. Okay. Test cross is most useful to determine. So let's look at the first option. Phenotype of recessive parent. No. Here in test cross, recessive parent is being crossed uh, with an individual जिसका जीनोटाइप हमें जानना है और वो जो दिखने में डोमिनेंट जैसा है. ठीक है, जीनोटाइप ऑफ a dominant phenotype individual. This is what why we are doing test cross, not to find out the chromosome number or the presence of mitochondria or anything else. Okay. So, students, that was all for today's session. I hope you enjoyed the session and you found the session very informative. Or now, I want you to solve the assignments which are being given in the description below, and do reach us if you face any problem or any challenge while solving these questions, and if you have any challenge in understanding concepts from this particular chapter. So, I wish you all the very best. Thank you so much.